Hello everyone, welcome to our beautiful channel Rupam's Bio Classes. My name is Rupam Sarnokar and today I welcome you in our this lecture. See, देखो आज हम लोग फर्स्ट वीडियो हिंदी में शूट करेंगे सीबीएसई आईसीएससी के लिए और जेन पास यूजी जो भी नर्सिंग एग्जाम होता है उसके लिए भी हिंदी लैंग्वेज में, ठीक, हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में। देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हार्ट, इसको क्या बोलते हैं, हार्ट व बंगाली में बोलते हैं हृदपिंड, ठीक, हार्ट। सो देखो, heart is a vital organ in human body and every organ in human body made up of muscle. So heart also made up of muscle. The name of muscle that compose heart, the name of muscle that compose heart, it's called cardiac muscle. It's called cardiac muscle. So directly that's why the doctor of heart it's called cardiologist. Take all the term related to heart it's called cardio. Why? Because the muscle that compose heart it's called cardiac muscle. Okay, now what is the main function of heart? The main function of heart is pumping blood to all the body parts of human body. Okay, now hearts have four chamber. Hearts are four chamber. Before I started this I want to say that every vital organ is enclosed by a membrane. Every vital organ is enclosed by a membrane. This vital organ, the heart, if the vital organ is the heart, because we are studying about heart, if heart is the vital organ, the membrane is called pericardium. The membrane is called pericardium. I repeat, every vital organ what enclosed, every vital organ enclosed by a membrane. And since we are discussing about heart, so heart are also enclosed by a membrane. The membrane is called pericardium. So what is the covering of the heart? It is called pericardium. It is called pericardium. Okay, so the covering of the heart is called pericardium. Now heart have four chamber. The upper chamber is called auricle. Take upper chamber is called auricle and the lower chamber is called ventricles. The upper chamber have two portion. One is right, one is left. One is right and there is left. So right auricle, left auricle. Right auricle, left auricle. Both are in upper position. And on the lower position, ventricle, right ventricle, left ventricle. Right ventricle, left ventricle. ऊपर क्या होता है? ऑरिकल राइट साइड में होगा तो राइट ऑरिकल, लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट ऑरिकल। नीचे क्या होगा? वेंट्रिकल। अगर राइट में होगा तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, तो देखो ऐसे तो हम हार्ट का जो द डायग्राम ऑफ हार्ट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। हार्ट का जो डायग्राम है वो वेरी कॉम्प्लेक्स है, तो मैं तुमको समझाने के लिए मैं एक सिंपल एक बॉक्स से समझाऊंगा ताकि इजी हो जाएगा। ठीक, सिंस दैट diagram of heart is very complex, to understand the function of the heart we are drawing a simple form of heart. Suppose I make this, this is the heart, this is called what sir? Heart. Sir how? सर सच में हाथ ऐसा, हार्ट ऐसा दिखता है? नहीं, हार्ट ऐसा नहीं होता है। हार्ट एक्चुअली में ऐसा होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है हार्ट का स्ट्रक्चर। ठीक, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो मैं ऐसे सिर्फ बता रहा हूँ कि समझाने के लिए। तो अगर मैं क्या बोला, हार्ट्स हैव फोर चेंबर, सो फर्स्ट ड्रॉ फोर चेंबर and the upper chamber is called sir what? Upper chamber is called auricle, and this is my right side, so this is called right auricle. So this is left side, so this is called left auricle. अच्छा, lower portion is called ventricle, so right ventricle, left ventricle. Clear? अच्छा sir, अच्छा। Human body circulation is double circulation. Double circulation means single heart do two types of circulation. Single heart do two types of circulation. If any heart do two types of circulation, this is called double circulation system. So human heart is a type of double circulatory system. See, first if we draw this above the heart, lungs is present, lungs. Take, and suppose I take it here is the body tissue part. Tissue parts means what? All body parts. Tissue means what? All body parts. Take, now so what is the function of blood? Blood carry oxygen to different parts of human body and it taken out deoxygenated blood from the tissue to heart. ठीक, तो अरे हार्ट का फंक्शन क्या है? हार्ट ब्लड को पंप करता है। वो ब्लड का क्या करता है? वो ब्लड पूरा बॉडी में एक्सप्लोर हो जाता है, वहां पे जाके ऑक्सीजन को दे देता है, बॉडी में ऑक्सीजन दे देता है और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ जाता है।
तो जब बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाएगा उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटेड ब्लड, जब आएगा ऑक्सीजन को छोड़ के तब उसको क्या बोला, डीऑक्सीडेटेड ब्लड। क्या बोलेगा उसको, डीऑक्सीडेटेड ब्लड। सो all the from all the body part deoxygenated blood come into right atrium from all the, मैं रिपीट कर रहा हूं, from all the body part deoxygenated blood. So deoxygenated blood means what? The blood which do not have oxygen. The blood which do not have oxygen is called deoxygenated blood. So all the deoxygenated blood from all the body parts are coming into right atrium through a vein is called vena cava. It's called vena cava. Acha, what is vein and what is artery? If any blood if any duct originated from heart, it is called artery. If any duct originated from other parts except heart, it is called vein. I repeat, कोई भी पार्ट, कोई भी ब्लड को फ्लो करने वाला डक्ट अगर हार्ट से मतलब हार्ट से ओरिजिनेट होगा, इफ एनी blood flowing ducts originated from heart, it is called artery. And if it is originated from other parts like other different body parts, it is called vein. अच्छा, तो वेना कावा इज व्हाट? वेना कावा क्या कर रहा है, पूरा बॉडी का जो भी डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, मतलब ऑक्सीजन यूज करने के बाद जो भी ब्लड बचा, सिर्फ ऑक्सीजन जिसमें नहीं है उसको बोलता है डीऑक्सीडेटेड ब्लड। उस डीऑक्सीडेटेड ब्लड को लेके कहां पे आ रहा है, राइट अट्रियम में। तो पूरा बॉडी का डीऑक्सीडेटेड ब्लड कहां आ रहा है, राइट अट्रियम में। यहाँ पे एक ओपन चेन बनाता हूं कि ये ब्लड यहाँ पे एंटर कर रहा है राइट अट्रियम में, और यहाँ पे एक बनाता हूं कि ब्लड एंटर कर रहा है कहां पे, राइट अट्रियम में। और किससे एंटर कर रहा है, वेना कावा से। किससे एंटर कर रहा है, मान लो वेना कावा से। किससे एंटर कर रहा है, वेना कावा से एंटर कर रहा है। किससे एंटर कर रहा है, वेना कावा से। देखो अगर मैं ड्रॉ बनाऊंगा ऐसे, ठीक, अच्छा, तो इसका नाम क्या दूंगा, वेना कावा। ये क्या है, वेन है। व्हाई इट इज कॉल्ड वेन्स, बिकॉज इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अदर पार्ट एक्सेप्ट हार्ट। ये हार्ट से ओरिजिनेट नहीं होता है, बॉडी का डिफरेंट पार्ट से ब्लड को लेके आता है। कौन से ब्लड को, डीऑक्सीडेटेड ब्लड को लेके आते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वेन। और द नेम ऑफ द वेन इज वेना कावा। VENA, वेना कावा, CAVA। Now vena cava is two types, one is superior vena cava and one is inferior vena cava। जो ऊपर साइड में होता है इसको बोलता है superior vena cava, SVC, superior vena cava, and this side is called inferior vena cava, and these two opening have valve। Sir, what is valve? Valve is a muscle layer which prevent backflow of blood। मीन्स जहां पे valve होगा, अगर ब्लड वहां से इंटर कर रहा है, जैसे यहाँ पे ब्लड आ रहा है, यहाँ से आके राइट एट्रियम में आ रहा है, यहाँ से ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा है, कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड। एक बार अगर डीऑक्सीडेटेड ब्लड राइट एट्रियम पे आ गया तो वो वापस नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वल्व है। तो वल्व क्या करता है, वल्व प्रिवेंट बैकफ्लो। जहां पे वल्व होगा वो क्या करेगा, प्रिवेंट बैकफ्लो। तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से क्या आएगा, डीऑक्सीडेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड आएगा, डीऑक्सीडेटेड ब्लड मींस जहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा, जो बॉडी का डिफरेंट पार्ट से आ रहा है, वो कहां पे आ गया, राइट अट्रियम पे आ गया। ठीक, अभी देखो राइट अट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वल्व रहता है, वो जो इस वल्व को बोलते हैं ट्राइकास्पिड वल्व। क्या बोलते हैं इसको, देखो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करो, वल्व को ऐसा वल्व होता है इसको। यहाँ पे 3 मसल लेयर होता है, 1 2 3, 1 2 3, मतलब 3 मसल लेयर ऐसे ज्वाइंट होकर एक वल्व बना है। ठीक, इसको बोलते हैं क्या, ट्राइकास्पिड वल्व। क्या बोलते हैं इसको, ट्राई मींस 3 मसल लेयर आर ज्वाइंट टुगेदर एंड फॉर्म दिस वल्व, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राइकास्पिड वल्व। सो इट इज कॉल्ड ट्राइकास्पिड वल्व। सो ट्राइकास्पिड वल्व, जब यहाँ पे ब्लड आके एक्युमुलेट हो जाएगा राइट एट्रियम में, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीडेटेड ब्लड, तब इसमें इसका वल्व के ऊपर प्रेशर आएगा तो वल्व क्या जाएगा, खुल जाएगा। सोचो ना एक बार, एक यहाँ पे ब्लड आके एक्युमुलेट हो गया, कहां पे, राइट एट्रियम पे। अगर राइट एट्रियम पे ब्लड आके एक्युमुलेट हो गया तो वल्व के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वल्व ऐसे खुल जाएगा। वल्व ऐसे था, ऐसे खुलेगा, ऐसे नहीं खुलेगा, ऐसे नीचे की तरफ, वल्व ओपन टुवर्ड्स डाउन, तो वल्व ऐसे खुल जाएगा। अगर वल्व ऐसे खुल जाएगा तो ऑल द डीऑक्सीडेटेड ब्लड, अगर वल्व ऐसे खुल जाएगा, कौन सा वल्व, ट्राइकास्पिड वल्व, व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन राइट अट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। If the tricuspid valve which are present between right atrium and right ventricle are opened, all the blood from right atrium come into right ventricle.
from right atrium to come into right ventricle. Sir, till now we are discussing about only deoxygenated blood. Acha. So all the deoxygenated blood from the body that are coming firstly in right atrium, now it coming into right ventricle through opening of tricuspid valve. Acha. On the base of right ventricle, there is another opening, and all the opening are regulated by a valve. All the opening are regulated by a valve in heart. So this opening is called this opening. From this opening, there is a duct is originated, and since the duct originated from the heart, this duct is called artery. मैंने बोला था कि कोई भी डक्ट अगर हार्ट से ऑरिजिनेट होगा उसको आर्टरी बोलेगा, और कोई भी डक्ट अगर हार्ट से नहीं होगा किसी और जगह से होगा उसको वेन बोलेगा. ये डक्ट हार्ट से ऑरिजिनेट हो रहा है, ये डक्ट हार्ट से ऑरिजिनेट हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, artery. So this is called artery. अच्छा, now this artery which are originated from the base of right ventricle. Now this artery which are originated from the base of right ventricle carries deoxygenated blood into the directly lungs, This artery, since it carry deoxygenated blood to lungs, it is called pulmonary artery. I repeat once again, why it is called pulmonary? Because it carry the blood to the lungs, and all the term related to lungs, it is called pulmonary. Since it carry deoxygenated blood to lungs, it is called pulmonary. And it is originated from the heart, that is called artery. So why pulmonary? Because it carry the deoxygenated blood to lungs, that is why it's called pulmonary. And since it is originated from the heart, so it is called artery. So pulmonary artery carries deoxygenated blood from the right ventricle to the lungs. So why the blood will go into lungs? Because lungs is the only portion in human body where it get oxygenated, it get oxygen. So to make deoxygenated blood oxygenated, it go to lungs. In the lungs, the blood get oxygenated. Through respiration. Now from the lungs, two pairs means four. From the lungs, two pair pulmonary vein coming into left auricle, How many? Two pairs. Now it is called pulmonary vein. See, pulmonary, why? Because it is from the heart. See, it is related to heart. And why it is called vein? Because it is these two pairs duct are not originated from the heart, it is originated from the lungs. So lungs is other than heart, that's why it is called vein. If any duct only originated in the heart, it is called artery, and the duct originated other part except heart, it is called vein. Since this is originated lungs, which is not heart, that's why it is called vein. And why pulmonary? Because it is lungs. So it is called pulmonary veins, which is in number two pairs, means four pulmonary veins or two pair pulmonary veins carry oxygenated blood. Sir, how the blood get oxygen? In the lungs, the deoxygenated blood carried out by the pulmonary artery which are coming into lungs, it get oxygenated, and the oxygenated blood now coming into left auricle. Now all the oxygenated blood come into left auricle. Now in between left auricle and left ventricle, there is another valve which is called bicuspid valve. Means it have two muscle layer. This name is also called mitral valve. So in the junction of left auricle and left ventricle, there is two muscle layer which are making a valve. It is called bicuspid valve or mitral valve. So when the oxygenated blood come into left auricle, it creates pressure. So this valve is open, and all these two valves are open to the down. So if the valve is open down, the blood coming to left ventricle. And from the left ventricle, there is a base of the left ventricle. There is another artery. Because why it is artery? Because it is originated from the heart. See, another artery which is called aorta. This is an artery. Aorta is an artery. Why aorta is an artery? Because aorta originated from the heart. So aorta is an artery. And from the left ventricle, all the blood
from the left ventricle all the blood through aorta, which is an artery because it is originated from the heart, is distributed to all the body parts. And which blood will coming out? Oxygenated, because this is whole the oxygenated blood. This whole are oxygenated blood. So in a heart, right side are deoxygenated blood and left side are oxygenated blood. So aorta is the largest artery in human body. Aorta is the largest artery in human body which distribute the oxygenated blood from left ventricle to all the body parts. From left ventricle to all the body parts. Take so all the body parts. So there is two type of circulation. One is to the lungs and coming to lungs. This is called pulmonary circulation. So in pulmonary circulation, who are involved? Right ventricle and what? Right ventricle and left auricle. So right ventricle and left auricle are included in pulmonary circulation. And body parts के साथ कौन कौन कनेक्ट है? Left ventricle, because left ventricle carry oxygenated blood to all the body parts, and from all the body parts deoxygenated blood come into right auricle. So right auricle plus left ventricle carry what? Systemic circulation. Why it is called systemic circulation? Because it is either going to body parts and from coming into body parts. Okay? So one is systemic circulation where right auricle and left ventricle involved, and one is pulmonary circulation where right ventricle and left auricle is involved. This is since here is two type of circulation, so heart show double circulation. And all this process are happen to take only 0.8 second. 0.8 second means एक बार में कितना टाइम लेता है? 0.8 सेकेंड. सो एक मिनट 0.8 सेकेंड कैसे आया? एक मिनट मीन्स 60 सेकेंड में हार्ट कितना बार बीट करते हैं? 72 टाइम्स. सो 72 by 60 इट विल कम अच्छा, एक मिनट में हार्ट कितना बार बीट करता है? 72 टाइम्स. तो 60 by 72 इट विल कम 0.8. तो एक मिनट में ठीक एक सेकंड में कितना एक बार बीट करने में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकंड. सो इट इज कॉल्ड कार्डियक टाइम आउट. तो यही था आज के डबल सर्कुलेशन. इफ द वीडियो अच्छा लगा तुमको, अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो. नया बना रहा हूँ वीडियो हिंदी में तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लैंग्वेज में, धीरे धीरे सही हो जाएगा. चलो बाय.